Hello friends, today I'm going to talk about a Bengali film. The name of the film is Prajapati Biscuit. So it's about basically the Prajapati Biscuit is a movie that is trying to show you what happens during arranged marriages and what should be looked into before arranging marriages and stuff. You see, when it's a love marriage, then the man and the girl and the boy, they meet and they discuss and they exchange opinions, views, they joke and all. So if it's a love marriage, then you're ready to adjust, and you adjust also eventually, because after all you have loved, you have had the feeling of love and stuff like that, so that's okay. So in love marriages, it doesn't really matter the difference between the families, as far as, especially as far as financial status and education status is concerned. हालांकि अभी भी लोग बहुत कुछ देखते हैं, लाइक हमारा धर्म, जात अभी भी देखते हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं देख रहे हैं इंडियंस, लेकिन फिर भी जो शिक्षित लेवल ऑफ पीपल हैं वो आजकल काफ़ी हद तक इतना ज़्यादा देखते नहीं है। बहुत बंगाली लड़कियों ने साउथ इंडियन से शादी किया है, बहुत पंजाबियों ने यूपी से शादी किया है, राजस्थानियों, तो ऐसा कुछ नहीं है आजकल के दुनिया में कि इवन इन अरेंज मैरिजेस. But what they wanted to show in this film is that okay, it's fine if it's an arranged marriage, but there's a but factor here. The factor is this, that you have to see the two things in while you're arranging for a marriage. That one must see, the parents must see this, because after all they are arranging the marriage. लव मैरिज में तो लड़का या लड़की खुद का अपना डिसाइड करते हैं, बट अरेंज मैरिज में तो ऐसा नहीं है ना. तो फाइनेंशियल स्टेटस आपको देखना पड़ेगा, और देखना पड़ेगा आपका एजुकेशनल लेवल, आपका एजुकेशनल जो लेवल है फैमिली का. these things are very important when eventually you go into a new house, because marriage is between two families, basically they become your extended family, right? So exactly this is what has been shown in this film. वो लड़की जो थी वो she was belonging to a poorer class people, यू नो, पूरे जिसको एलएस बोलती है, अर्चना पूरन सिंह ने जो बहुत फेमस कर रखा है एलएस, यू नो, लो सोसाइटी काइंड. सो दे हैव एग्जैक्टली शोन दैट दे आर वेरी एक्सट्रीमली मीडियोकर, लो मिडिल क्लास का है सब. लड़की वहाँ को बिलोंग करता है, और जो लड़का जो फैमिली था वो बहुत ही हाईली कल्चरली वेरी रिच है. इवन फाइनेंशियली दे आर रिच, एंड मोर देन फाइनेंशियली रिच, दे आर कल्चरली रिच, in the sense that the mother-in-law, the son's mother, she is fond of Ravindra Sangeet and she teaches Ravindra Sangeet and stuff. She's, you know, that elite, like Bengalis call such people to be very extremely belonging to elite class, you know. So of course they have shown one thing here कि the guy falls, I believe falls in love with a girl, and वो वहाँ से उसको रॉयल बूट मिलता है, in a sense वो लड़की उसको छोड़कर चली जाती है, जिसके लिए probably he was very depressed. So in a haste they get him married to a girl जो भी उनको अच्छी लगती है. इन अ सेंस अच्छी लगती भी नहीं है, वो ऐसी फोटो दिखाया था, उसका मन मिजाज खराब होता है, यू नो, व्हेन यू आर डिश्ड इन लव एंड यू फील चीटेड, तो यू आर नॉट रियली बॉदर टू हूएवर यू आर गेटिंग मैरिड, फाइन आई विल गेट मैरिड. ऐसा कुछ एक माहौल में लड़के की शादी हो जाती है एक लड़की से वो बिलोंग्स टू वेरी काइंड ऑफ अ फाइनेंशियली बैकवर्ड फैमिली. ये दिखाया है वेरी क्लियरली, दे हैव शोन दैट फाइनेंशियल स्टेटस भी नहीं था और ना एजुकेशनल स्टेटस भी नहीं था लड़की का. ठीक है, not up to the mark था. I'm not saying that कोई पाप है ये, that she could have gotten married with someone of her own level and would have been very happy. But the problem started was she belonging to that LS and she happened to come to the HS, high society. You know, that was the problem in this movie. That is what exactly has been shown. तो उसमें दिखा रहे हैं कि भैया she tries to you know adjust herself. अच्छा बच्चा नहीं हो रहा था पर्सन लोगों का, तो they go through a lot of stupid and silly, you know, experiences of going to a sexologist and talking, and they are talking about having to talk about their private life and stuff like that, you know, it's very embarrassing for both the guy and the girl. They have shown both the aspects here. This is something very important. They have shown very beautifully how even the guy is humiliated because he is, you know, that Vicky Donor kind of thing is happening to him, and the girl is you know, being injected on her hip with estrogen injection and stuff. So both of them went through a humiliation. Why? Because they have to prove to the family that they are happily married. And how are they happily married? How do they prove that? Because बच्चा पैदा हो गया ना. This is a very wrong, this is a misconception basically.
द पेरेंट्स थिंक दैट हाँ सब कुछ ठीक है क्योंकि बच्चा पैदा हो गया, बच्चा पैदा करने में कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं, राइट. सो बेसिकली दे ऑल्सो वॉन्ट टू शो हियर कि बच्चा के लिए आप खुद पहले रेडी होइए. पहले तो आपको खुद को समझना है कि वेदर यू लव और नॉट, वेदर यू आर रेडी टू एक्सेप्ट अ चाइल्ड, वेदर यू आर रेडी टू रेज द चाइल्ड विद लव एंड केयर और नॉट. अनलेस एंड अनटिल दैट हैपन्स, इफ दैट इज नॉट स्पॉन्टेनियस, प्लीज आई वुड इन फैक्ट रादर रिक्वेस्ट यंग कपल्स टू नॉट गो फॉर चाइल्ड बर्थ. कोई आपको एहसान करने का जरूरत नहीं. भारत माता के ऊपर ऑलरेडी बहुत लोग मुंह दल रहे हैं भारत माता की छाती में, ठीक है ना. समझ में तो आ ही रहे हैं क्या बोल रही हूँ. तो कुछ ऐसा ही दिखाया गया है इस मूवी में. फिर बाद में वो लड़की बेसिकली शी गेट्स फेड अप, शी इज अनेबल टू कंसीव. अच्छा, इसमें एक सीन दिखाया था जो एक हमारे बंगाल में ये बहुत प्रचलित है. अब सुपरस्टिशन है कि है क्या है मुझे पता नहीं. कार्तिक भगवान जो है, जिनको मुरुगन कहते हैं साउथ इंडिया, कार्तिक कहते हैं बंगाली में, जो दुर्गा माता के साथ भी आते हैं अपनी माँ के साथ, देखा होगा आप लोगों ने. तो वो अगर मतलब ये लोकेलिटी में अगर पता चले कि बच्चा हो नहीं रहा, तो वो कार्तिक भगवान को अगर रख दे चोरी छुपे, तो आई बिलीव ऐसा एक प्रचलित अफवाह है कि बच्चा हो जाता है 1 साल में. अब ये मुझे पता नहीं कितना ऑथेंटिक है और या कितना ट्रुथ है इसमें, बट लेकिन मेरी खूब जान पहचान की लड़की वॉज अनेबल टू कंसीव एंड एक्चुअली उसका बच्चा हुआ था, because after within 1 year of doing the puja of Kartikeya. So anyway, this is बंगाली में एक कहावत है, बिश्या से मिलाए बोस्तु तौर के बहु दूर. तो ऐसा ही कुछ है. तो हालांकि इस मूवी में दिखाया कि इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट कार्तिक का पूजा करती है वो लड़की, गोइंग अगेंस्ट हर सासू माँ, बिकॉज सासू माँ वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दिस पूजा पार्ट एंड ऑल दैट, बट शी डज नॉट कंसीव. तो इसमें ये भी दिखाया कि भैया सुपरस्टिशन में मत लड़िए आप ठीक से दिखाइए. बट एट द एंड ऑफ द डे आई ऑल्सो वॉन्ट टू शो कि बच्चा पैदा करना इज नॉट द एंड ऑफ, is not everything. You have to be in love, you have to be sure of your love, and then when you're sure of each other's love, then go ahead for a childbirth. Bring a child to this earth by all means, but not before that. This is what basically the movie tries to show, that understand the couples should understand each other first, love each other first, and only then they should bring about the love object to this वर्ल्ड. अदरवाइज क्या फ़ायदा, क्या है. बच्चा है, अगर पैदा होगा, बच्चा देखेगा माँ बाप झगड़ा कर रहे हैं, माँ बाप में कोई प्यार नहीं है, बच्चा बिल्कुल भी एक ब्रोकन फैमिली सा होगा, वो ऊपर से और धरती माँ का ऊपर बोझ बन जाएगा. समझ में आ रही है ना बात. इसलिए कपल्स को दिखाया गया है कि बॉस लव, देन गो फॉर लव मेकिंग एंड देन गो फॉर चाइल्ड बर्थ. So this is what the movie is, Prajapati Biscuit is all about. It's quite a good take on arranged marriages and all that stuff, and the fact that women are मतलब शादी हो गया तो बच्चा करो. This is wrong. And bacha is not everything. Someone who is unable to go for childbirth for whatever reason, even whether it's a boy who's having some semen count का problem है या लड़की का कोई estrogen का problem है, it doesn't matter. 2 individuals are living together as a companion is good enough. I don't understand why humans create such a big hype of childbirth and all that. So get out of those, superstitions and love. That's what the movie is trying to say. Thank you for listening.